Hello students, good morning. Students, let's start learning the last part of this poem, Aunt Jennifer's Tigers. Just imagine what would be the last part. The last part relates to poetic devices. Poetic devices. So let's start learning the poetic devices as used by the poetess in this poem, Aunt Jennifer's Tigers. Okay, so let's start writing the names of the poetic devices and details. Dear students, poem is 6th. Name is Aunt Jennifer Tigers. Aunt Jennifer's Tigers. Okay, Aunt Jennifer's Tigers. Okay, topic is poetic devices. Details of poetic devices. Alankar. Which poetic devices have been used by the poetess in this poem? Okay, so I write here the details. First of all, I would like to write here name of poetic device, name of poetic device. Okay, name of poetic device, words included, words oblique line. Okay, used in, words of lines used in, जिनमें इसका प्रयोग किया गया है, used in. Okay, I write the names of the poetic device first. First of all, number 1, I write the name of the poetic device, alliteration. 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 Okay, now I would like to write down the words which have been the part of this poetic device alliteration. Okay, so now I write here the words which have been the part of this poetic device alliteration. So I write here the words. First of all, we should check it out in the book also. I keep here the book. Okay, so now I would like to tell you which words have been used here as the part of alliteration. Okay, so with the first line, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. So here beneath and the, or the tree. So these two words here, as you can see here, bete. Here in this word the is T, and here again in this word tree is T. So when we find, okay, when we find the same letter with the same sound, when we find the same letter which is the consonant, and in the consecutively written two words, okay, so these the two words contain the poetic device alliteration. Okay, T and T. Okay, and now here they pace in sleek chivalric certainty. So chivalric certainty, here are two words. So I would like to write here the two words. So in the first stanza, here are two words. In the next stanza alliteration, Aunt Jennifer's fingers fluttering. So here fingers and fluttering. Okay, fingers and fluttering. बेटा समझ में आ गया कि नहीं? देखो फिंगर में भी एफ है और फ्लटरिंग में भी एफ है, तो एफ
क्योंकि एक ऐसा लेटर जो कॉन्सोनेंट है, जब बराबर आमने सामने लिखे हुए दो शब्दों, आगे पीछे लिखे हुए दो शब्दों में कोई भी एक फर्स्ट जो लेटर होता है जो कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट की साउंड अगले वर्ड के फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट जो सेम लेटर्स होते हैं, उन दोनों सेम लेटर की साउंड एक जैसी जब आती है तो उसको अनुप्रास अलंकार से हम उसको अनुप्रास अलंकार से डिफाइन करते हैं। इसमें थ्रू हर वुड इस लाइन में नहीं है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, नो इसमें नहीं है। द मेसी वेट, देखो द मेसी वेट, इसमें सॉरी आई एम सॉरी, इसमें एम है, इसमें डब्ल्यू नहीं आ रहा। अब अंकल्स वेडिंग बैंड, इसमें भी नहीं है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स, इसमें भी नहीं है। बस सिर्फ इस सेकंड स्टैंजा में ये दो वर्ड्स है, फिंगर्स फ्लटरिंग, जिसमें कि आपको एफ एफ दिखाई पड़ रहा था, हम जो लिखेंगे अभी। उसके बाद व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, ओके, स्टिल रिंग्ड विद ऑडियंस शी वाज मास्टर्ड बाई, इसमें भी नहीं है। द टाइगर्स, द एंड टाइगर्स, टी एंड टी, ओके, इन द पैनल दैट द मेड, in the panel that the maid will go on prancing proud, prancing and proud, okay, and unafraid. So prancing proud, okay, the tigers, and here the word the tree, and the word is here in the first, okay, we find here the chivalric certainty. So now I would like to write the words for you, okay. So bete I have given the, we have selected the words here, okay. So now I would like to write here the words for alliteration. What are the words? First is the tree, the, okay, and tree, T-R-E-E, okay, the tree. The second word is here chivalric certainty, C-H-I-V-A, C-H-I-V-A, okay, L-R-I-C, chivalric, certainty, T-A-I-N-T-Y, okay. In the first stanza, this is in the first stanza number first, S-T-A-N-Z-A, stanza number 1. Okay, in the second stanza, in the first stanza, one more poetic device is also used, but I would like to write its name later. First of all, I am to write here the words which are the parts of this poetic device alliteration. Now the second stanza, fingers fluttering, F-I-N-G-E-R-S, fingers, and the next word is fluttering, F-L-U-T-T-E-R-N-I-G, fingers fluttering. Okay, as we have already selected. And the next word was here, she wait, sits heavily upon and Jennifer's hand. Okay, here is single one, okay, this one. And in the next here, the stanza number third, in the stanza number third, here are the words, okay, prancing proud, this is only single one, stanza number second, S-T-A-N-G, stanza number 2. And now P-R-A-N-C-I-N-G, prancing, and the next word is proud, P-R-O-U-D, proud. Okay, this is in stanza number third. Prancing proud, S-T-A-N-Z-A, stanza number 3. Okay, and the last is here, the tigers. We can also write it here. Okay, but I think no need to write here. Fingers fluttering, the, and prancing, chivalric certainty. Fingers fluttering, prancing proud, the tree. And the tigers, we can also write here the word the tigers. The tigers, T-I-G-E-R-S. Okay, so here we find here in the stanza number, these are in the stanza number 3. Okay, in stanza number 3. So here are the words. So this is the part of alliteration. Now I would like to write here, bete, I would like to tell you here one thing about one more poetic device. And what is the poetic device here? I tell you here. This is the poetic device. And bete, as you can see here in this first stanza, they and they. I told you in the poem, I think, keeping quiet, let's.
So in this poem, we in the poet Keeping Quiet, I also told you about this poetic device. What is the poetic device bit here in this line? As you can see here, here is the word they and again they. तो जब भी कभी आप किन्हीं दो लाइंस के शुरू में आपको एक जैसे शब्द लिखे हुए मिलते हैं, कोई भी दो वर्ड, तो उन दोनों को हम एनाफोरा से यूज करते हैं। एनाफोरा एक पोएटिक डिवाइस का नाम होता है, जिसका मतलब पहचान ये होता है, इसकी एक पहचान ये होती है कि भाई किसी दो लाइन में आगे पीछे लिखी हुई दो लाइन्स के अंदर विद इन टू, व्हेन वी फाइंड द सेम वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ एनी टू लाइन्स, व्हेन वी फाइंड द सेम वर्ड okay in the beginning of any two lines, okay, so the poetic device anaphora is used there. So I would like to write here the poetic device anaphora, okay, which is in the first stanza. So the name of the second poetic device is here anaphora, okay, anaphora. The second is anaphora, ANAPHORA, anaphora. And here the anaphora is noticed there in the they and again they. You will have to write in this way, okay. Stanza number first. So now I would like to write here the next poetic device. And the next poetic device here is, okay, the name of the next poetic device is here number third, transferred epithet. What is the name? TRANSFERRED, transferred epithet, EPITHET, transferred epithet. So where we can find this, that poetic device better in which stanza? I would like to tell you here. Transferred epithet is given here, okay. Terrified fingers, I think here. Terrified hands. The word terrified is used as an adjective. भाई terrified शब्द किसके रूप में प्रयोग किया गया? विशेषण के तौर पर। और ये विशेषण किसके साथ जोड़ दिया? नाउन्स के साथ में। तो जब भी आपको बताया गया था कि कोई भी विशेषण किसी नाउन के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर एपिथेट, यानी उस विशेषण को उस नाउन के साथ में अटैच किया जाता है तो सेंस में टेरिफाइड एपिथेट का हिस्सा बन जाता है। When we include the sense of any adjective into any noun, so it becomes the part of, it is known as the it contains the or it works as a poetic device named transferred epithet, okay. Transferred epithet means the transfer of the adjective into a noun, known as transferred epithet in shortcut definition. I would like to write here the word. What is the word here, bete? The word is here transferred epithet, terrified hands, TERRIFIED, terrified hands, HANDS, terrified hands. And this the terrified hands are written in the which line? Now in the line in the stanza number third, okay. And in the same stanza we find here one more poetic device, okay, and this is metaphor. What is the name of the poetic device? Metaphor. Metaphor stands for rhymed with audience. This the same word was, I think, given in the question paper of this year's examination, okay. So here metaphor, METAPHOR, metaphor. What is metaphor here? So metaphor is used here in this word, okay. Or words are here ringed with audience, RINGED, ringed with audience, ORDEANS, ringed with audience, because it is used as metaphor because here, as we can see here, even the death, even Aunt Jennifer has met her death, but even after her death would not free her, as her death would not free her, as the wedding band did not free her. So here the word metaphor is used here in this line, ringed with audience, okay. And the next is here hyperbole, HYPERBOLE, hyperbole. I underline this all the, okay, hyperbole. What could be the hyperbole in which word? I think here in this poem, as we can find here, the massive weight of uncle's wedding band. Oh, the massive weight. So here the hyperbole.
poet has used here this the line in hyperbolic sense. Okay, अतिशयोक्ति के तौर पर. So here the word hyperbole is here. The massive weight, the massive weight, okay, of uncle's wedding band, of uncle's wedding band. Okay, kindly note them down. And hyperbole. Okay, and after hyperbole we also come to the next, okay, poetic device. It is known as climax. Which is one? Climax. So this is the one, climax, climax. So what is the climax here? In which line we can find the word climax? Because the poet has used in the last line as the part of climax. Will go on prancing, proud, none unafraid. बिल्कुल शिखर पर ले जा करके उसको ऐसी बातें बोलती है जैसे कि मैंने उनको बहुत ज़्यादा शिखर पर चढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ कर डाली है यहाँ पर। इससे ज़्यादा तो वो क्या कर सकते हैं। क्लाइमैक्स तो लास्ट चरम सीमा होता है ना, चरम सीमा, चरमोत्कर्ष जिसको बोलते हैं। चरमोत्कर्ष पोजिशन में जब किसी की कोई बात की जाती है तो उसको हम क्लाइमैक्स बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्लाइमैक्स का प्रयोग विल गो ऑन प्रेंसिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विल गो ऑन प्रेंसिंग, PRANCING, प्रेंसिंग। और ये जो दोनों वर्ड से कौन से स्टैंजा में आ रहे हैं? स्टैंजा नंबर 3 में आ रहे हैं, स्टैंजा नंबर 3। ओके, द मेसी वेट ऑफ अंकल वेंज, ये तो स्टैंजा नंबर 2 में है और ये स्टैंजा नंबर 3 में है। ओके, तो आपको इस प्रकार से ये जो बातें बताई गई हैं बेटा इसके बारे में, पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, तो हमने कुछ पोएटिक डिवाइसेस लगभग इसमें निकाल ली है। कुछ एक दो पोएटिक डिवाइस और बचाते हैं जिनको मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले हमने क्या लिखा? एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। फिर हमने एनाफोरा लिखा। इसका एक शाब्दिक मीनिंग होता तो है तुम्हें हिंदी में, लेकिन इसका कोई शायद हम समझ नहीं पाएंगे। एनाफोरा में होता कुल मिलाकर के जस्ट लाइक ए रिपीटेशन, पुनरावृत्ति की सेंस में होता है। कोई वर्ड जो दोबारा से यूज किया जाता है उसकी दोबारा पुनरावृत्ति हो जाती है किसी सेंटेंस में, अगले सेंटेंस में फिर दोबारा से उसी वर्ड को यूज कर लिया जाता हो, तो उसके लिए एनाफोरा का प्रयोग किया जाता है। फिर ट्रांसफर एपिथेट मैंने बता ही दिया कि जिसमें कि जो विशेषण होता है, एपिथेट का मतलब विशेषण होता है। इट इज नोन एज एन एडजेक्टिव। जब ये एडजेक्टिव जो होता है किसी भी नाउन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसके अंदर उसकी सेंस को चेंज करने के लिए, तो वहां पर ट्रांसफर एपिथेट का प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट में आप समझ लीजिए। मेटाफोर, ठीक है, मेटाफोर का मतलब क्या होता है? जैसे सिमिली होता है, सिमिली रूपक अलंकार होता है, मेटाफोर उपमा अलंकार होता है। किसी चीज को हम उस प्रकार से हम जब यूज करते हैं तो मेटाफोर में, तो इसमें ये एक कंडेंस्ड सिमिली होता है। कंडेंस्ड सिमिली यानी कि कुछ सिमिली का पार्ट इसके अंदर एडेड होता है जो ओपनली एज और लाइक का प्रयोग करके नहीं दिखाया जाता है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर लिंक्ड विद ऑडियंस का मतलब इस प्रकार से अभी उन्होंने बताया कि जैसे कि विवाह जो होता है उसको विवाह, जैसे कि उसकी मौत है, उसका मौत उसको कभी भी आज़ाद नहीं करेगी, तो वैसे ही उसकी शादी का जो बंधन था वो भी उसको कभी आज़ाद नहीं कर सका, उसको हमेशा बांध करके रखा। हाइपरबोल अतिशयोक्ति होता है। अतिशयोक्ति में कुछ चीज़ें बड़बोलेपन से कही जाए। क्लाइमेक्स सर्वश्रम होता है। नाउ आई वुड लाइक टू राइट हियर द रिमेनिंग मोर पोएटिक डिवाइसेस। Okay, students, so now I would like to write the name of the next poetic device, and it is 7th. What is this one? 7th poetic device. Its name is imagery. IMAGERY, imagery. So this the word imagery also contains. This the poetic device is also seen in the words like bright topaz, bright topaz, चमकीले पुखराज की भांति। फिर डेनिजन्स, bright topaz, denizens, DENIZENS, bright topaz, denizens, and the next word is a world of green, world of green. So these the two words are used there as imagery. Okay, and these are the parts of the first stanza, stanza number first. STANZ, stanza number first, and last is here as per my observation. Here the last is here symbols, SYMBOLS, symbol, as a symbol. Symbol used here wedding band, wedding band. As you can see here, our symbol has also been used here by the poetess, wedding band in the second stanza, wedding band. Okay, and here the tigers are also used as the symbol. Tigers
are also used as the symbols. Okay, because they are the symbol of they symbolize, or they are the symbol of freedom, courage, bravery. Okay, and bravery and strength, power. Okay, such kinds of words are used here. Okay, so here we have used around, here we have learnt about 8 to 7 to 8 kinds of poetic devices. Okay, so now I think one more poetic device can be seen here. Enjambment can also be seen here, but I think fluttering through, but it will not be understood by you very clearly. Fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. Okay, so when one line reaches, when the part of one line gets no full stop or no stops, and it crosses up to the next one, so it is known as enjambment, but it is not seen here in this poem very clearly. So we would like to learn only about these 8 poetic devices. Thank you, beta. It's more than enough today, and you should learn the poem again. This is the poem. There are 3 stanzas. Kindly revise this the poem very carefully. Thank you.